Check, check, check. Hello, students. Hello, hello, hello. Thank you for joining on time. So we'll get started in a few seconds here. A lot of josh and energy I can see in the class. अगर आप लोग इस channel के part नहीं हो, so join today, join today. Lot of free stuff, free information. I hope you can see me, hear me. Give me a thumbs up if you can. Check, 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 check. Hello, 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 hello. Give me a thumbs up if you can see me, hear me properly. There seems to be some technical issue here. You can see that. That's fine. Let's see. I can see myself. Yeah, Devansh, catastrophe. No, it's called some applications of trigonometry. पहले इसको heights and distances कहते थे. जब मैं छोटा बच्चा था तब इसको heights and distances कहते थे. And that's why I keep saying the same thing. And many students actually connected with that. Because honestly, when they say some application of trigonometry, they are not covering anything more than heights and distances. They are only covering height and distances. So even though the chapter is named as some applications of trigonometry, it only covers heights and distances. So which एक fancy name दे दिया, that's the only thing they have done. So if you can see me, hear me, can you give me a thumbs up so that I can see um, if you are able to, let me see how. Okay, my internet has some issues maybe. Because I can clearly see something is not right here. But we'll get started in roughly 1 minute. Let me try to figure out if there is any issue at the internet side at my end, which is very unlikely क्योंकि मेरे पास दो इंटरनेट है दोनों ही मैंने ट्राई कर लिए हैं. Catastrophe, Devansh, can you see me, hear me? Can you let me know if you can see me, hear me? Yes, sir. I don't know whether it's my audio problem, but okay. Okay, maybe. Let's see. Hello, hello, hello. Check, check. Now is it audible? My problem, I guess. Is it better now? Is it better? I think we are fine now. I hope everything is good now. And I'm really sorry for all these technical issues. I mean, उसपे किसका control है? Is it better now? Is it better? I think we are fine now. I hope everything is good now. And I'm really sorry for all these technical issues. Perfect है चलिए अगर life set है life perfect है तो let's get started right now right away. And as always, I forgot to bring in the writing pen over here. And thanks to my age, thanks to my यादाश्त. चलिए, so board exam फोड़ने का पक्का इरादा है. Give me a yes or a no in the chat box here. बोर्ड एग्जाम फोड़ने का जो प्रण किया था, दृढ़ निश्चय लिया था, उस पर अभी भी कायम हो गया. आर यू ऑन ट्रैक? तो भाई 10th में फोड़ देना है. 95%, 98% की जो बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, क्या वो बातें अभी भी हो रही हैं? चलिए ठीक है, हो रही हैं तो अच्छा है ना. माय नेम इज भवदीप सेठी and I have been teaching for a long time, and basically I'm a physics teacher who converts physics haters to physics lovers, and many students have wanted me to cover maths also so that I can convert some of you who are math haters as in math से डर लगता है सर, है ना. सो आपको मैं कन्वर्ट कर सकूं. एंड आई ऑलवेज से फिजिक्स को रट्टा मारोगे तो फिजिक्स बुरा मान जाएगी. सो टुडे वी आर गोइंग टू डू इन एक्सेलरेटेड मैथ सीरीज एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. एंड एज आई सेड, नाम is very misleading.
I mean, they say applications of trigonometry. Honestly, there are so many applications that they could have covered. नाम फैंसी कर दिया, काम वही है, दुकान का नाम बड़ा कर दिया, और प्रोडक्ट तो भाई वही है, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, AKA हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, राइट? दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू कवर टुडे. उसका नाम फैंसी करने से, दाम फैंसी करने से चीज फैंसी तो नहीं हो गई. दैट इज फॉर श्योर. तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर दैट, है ना, why accelerate maths? Because Olympiad, most of you are preparing for Olympiads also, or JEE or NEET, and these preparations go very, very smooth if you are very, very clear with NCRT ka syllabus. But the problem is the schools will take their own sweet time. They have their own schedule, and they will take months and months to do so. And that is why Vedantu Olympiad School has taken this initiative. Okay, bhai, we are going to accelerate maths. So इस accelerated maths में हम करते क्या हैं? Basically one chapter in one YTube session, 13 chapters has 13 days और 13 sessions में खत्म करेंगे इसको. It is free for all. There is no terms and conditions. There is nothing hidden here. It's not like that I'm going to teach you 50% or 10% or something, और बोलूं क्लाइमैक्स के लिए आप पेड क्लासेस में आ जाओ. दिस इज 100% कवरेज ओवर हियर. Theory, practice problems, PYQs, and homework also. So this course is not a spoon feeding thingy. You have to be sure with that. I'm not going to make you memorize anything. I'm not going to solve all the questions. This is the book that we are covering. But we are going to do a limited number of questions, one of each kind, and rest of it, I am assuming, I'm motivating you to you work yourself. अगर आप सोचते हो कि मैं मैराथन में भाग लूंगा, and you go to a coach and the coach gives you the tips and tricks, भाई इतने बजे उठना है, इतने बजे एक्सरसाइज करनी है, इतना खाना है ना, इतना भागना है रोज, और आप बोलो कोच भाई आप ही कर दो ये सब, तो कोच मैराथन जीतेंगे ना, आप थोड़ी जीतोगे. तो you are the one who has to walk on that, not your teacher. Teacher will guide you, and rest of it is your choice. So take this pledge. If you find difficulty in taking this pledge, I am really sorry. आज की क्लास बोरिंग होने वाली है आपके लिए. तो you have to say I pledge never to memorize physics and maths. मतलब physics और maths में कभी कोई रट्टा नहीं मारना है. और अगर आपको मुश्किल हो रही है pledge लेने में, तो I would really say कि आज की क्लास आपके लिए इतनी बोरिंग हो जाएगी कि rather, I mean मैं क्या बोलूं, है ना, वो अब आपकी चॉइस है. वेदर अटेंड करना है नहीं करना वो आपकी चॉइस है. मैं ये नहीं बोल रहा आप क्लास छोड़ के चले जाएं, बट ऑल आई एम सेइंग इज आज की क्लास आपके लिए बोरिंग हो सकती है ना, क्योंकि यार अगर आप प्लेज नहीं ले पा रहे हो कि मेमोराइज नहीं करना है, तो फिर आप मेरी क्लास में पक्का बोर हो गए, क्योंकि मेरी क्लास का पढ़ाने का जरिया, है ना, थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल है, कि जहां पर अगर आप रट्टा मारना चाहते हो, आप चाहते हो सारे सॉल्यूशंस मिल जाए, तो वो नहीं हो पाएगा. सो लेट्स गेट स्टार्ट द क्लास हियर. So the very first thing that you have to understand here is the angle of elevation and angle of depression. This is where many students try to memorize the definitions. कुछ नहीं, आप ये देखिए कि आप अपनी आंख की सीध में देखिए पहले तो. So what you have to do first of all is take the horizontal line, और जिस ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हो उसका कितना एंगल बन रहा है. जैसे आप ऊपर टावर पे देख रहे हो, तो वहां पर कितना एंगल बन रहा है, दैट एंगल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ एलिवेशन. आप एलिवेट कर रहे हो अपनी नजरों को, है ना. थिंक दैट वे. इट्स वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट, कि कितना आप अपनी आंखों को एलिवेट कर रहे हो, दैट एंगल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ एलिवेशन. क्लियर है यहां तक? कैटेस्ट्रॉफ, अर्जुन, एवरीबडी. So let's say you are standing here, let's say you are standing here and you're watching this Eiffel Tower. तो आप उसको आईफिल टावर को ऐसे देखोगे, ऐसे देखोगे, ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है. दिस एंगल माय डियर फ्रेंड्स इज कॉल्ड द एंगल ऑफ एलिवेशन. एलिवेट कर रहे हो. सिमिलरली अगर आप टावर के ऊपर खड़ा कर दिया आपको, वैसे तो इतना ऊपर जाना अलाउड नहीं है फॉर सिक्योरिटी थिंग एंड आल्सो सेफ्टी, बोथ ऑफ देम. सो अगर आप यहाँ खड़े हो और इस बंदे को देख रहे हो, सो इफ यू आर वाचिंग दिस पर्सन, यू आर गोइंग टू लुक बिलो. कितना बिलो देखते हो हॉरिजॉन्टल से, उसको कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन. सो दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन एंड दिस इज एंगल ऑफ डिप्रेशन. बच्चा बच्चा जानता है यार, दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स एंड दे आर इक्वल. So whatever is the angle of elevation is the same as angle of depression. Clear है भाई अर्जुन बेटा? क्लियर है आपको, है ना? कैटेस्ट्रॉफिक क्लियर है? यस, परफेक्ट परफेक्ट, है ना. वेयर शुड आई डू काइनेमेटिक्स? काइनेमेटिक्स के लिए आप इन्हीं क्लासेस में आओगे. कौन सी क्लास का है? ओके, एफ सी वर्मा, आई डू फिजिक्स गैलेक्सी,
I have done my coaching package. I'm really proud of you all, but focus here for now. So Mythbuster, जो last time भी किया था, there is a big misconception out there that trigonometry deals with right angle triangles. इधर दो बातें गलत हैं. पहली बात तो ये गलत है कि right angle triangle नहीं, किसी भी triangle के लिए trigonometry यूज होती है. Secondly, triangle नहीं, trigonometric applications है, sound waves, alternating currents. Everywhere you see sine waves around you. When I'm speaking, my sound is a sine wave, right? So but then again, as I said, our book is covering only height and distances part, and that is what we are going to stick to. Second misconception here is many students को होता है कि heights and distances is the most difficult chapter in 10th, और इसका fact ये है कि this is the easiest chapter, and let me tell you why your seniors might have told you it is difficult. क्योंकि क्या होता है ना, बाकी चैप्टर्स में आप कुछ याद कर लोगे, आइडेंटिटीज याद कर लोगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लोगे. हाइट एंड डिस्टेंस इज बेसिकली मोर अबाउट अंडरस्टैंडिंग अ सिचुएशन, making a diagram out of it, and then analyzing using sine theta, cos theta, tan theta. That is all. But the difficult part is the first part where you are given a situation. तो बुक में से उठा के नहीं मिलेगा कुछ, है ना. प्रॉब्लम आप समझिए, आपको एक अंडरस्टैंडिंग होगी अगर डायग्राम बनाने की, सिचुएशन समझने की, तो बहुत इजी है. बट दैट स्किल इज लैकिंग इन स्टूडेंट्स बिकॉज ऑफ स्पून फीडिंग. आजकल टीचर्स रेडीमेड सॉल्यूशंस दे देते हैं, है ना. इसका ये आके आंसर लिख दिया, तुमने भी नोट कर लिया, दूसरे का लिख दिया, नोट कर लिया, घर में जाके पढ़ लिया, तो दैट विजुअलाइजेशन पार्ट इज गॉन. Secondly, I have made many videos earlier. Chat GPT and all, they are very good useful tools. मैं रोज यूज करता हूँ Chat GPT, ये थोड़ी गलत चीज है. But because of Chat GPT, many people are, they are not doing their own visualizations, and that skill is going now. Okay, चलिए आगे चलते हैं. पहला क्वेश्चन, right into the questions here. So I'm going right into the questions. I'm not going to cover any theory because trigonometry theory कर चुके हैं. This is chapter number 9. Chapter number 9 में इन्होंने एक ही छोटी सी एक्सरसाइज दी है, जिसका पहला क्वेश्चन ही है, ये देखिए सेम चीज है ना. So a circus artist is climbing a 30-meter long rope. ये rope है, रस्सी है, which is slightly stretched and tied from the top of the vertical pole. तो ये pole है, AB pole है, AC rope है, ठीक है. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground is 30 degrees. इतना easy है, इसमें डायग्राम देने की जरूरत ही नहीं थी, पर उन्होंने दे दिया तो यूज कर लेते हैं. तो हमें पता है भाई ये rope है, रस्सी है, this is the rope and this is the pole. अब रोप और पोल के बीच में कुछ रिलेशन पता करना है ना. आंसर्स ऑलरेडी आने शुरू हो गए हैं. सो रोप और रस्सी क्या होगा, इफ दिस इज द एंगल, दिस साइड इज ऑपोजिट टू दैट एंगल, 30 डिग्रीज का ऑपोजिट, दिस इज हाइपोटेन्यूज. सो कैन आई से द लेंथ है ना, दिस इज नॉट हाउ यू विल राइट इन द एग्जाम, दिस इज टू अंडरस्टैंड. सो लेंथ ऑफ पोल or the height of the pole, it's one and the same thing, divided by the length of the rope, हाइट ऑफ पोल बेटर लगता है बट ठीक है, ऑफ रोप इज इक्वल टू साइन 30 डिग्रीज, है ना. यही तो बन रहा है, साइन थीटा हुआ ना ये, ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज. मैंने साइन क्यों लिया, ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन निकालना था. साइन 30 होता है 1/2. लेंथ ऑफ पोल नहीं पता, लेंथ ऑफ रोप पता है, लेंथ ऑफ रोप 20 दिया है इन्होंने. सो लेंथ ऑफ पोल divided by length of rope, which is 20, is sine 30. Sine 30 is 1/2. So answer comes out to be 10 meters. 40 नहीं भाई, 10 meters, है ना. थोड़ी जल्दी कर गए बच्चे. So this is 20, and think about it, how can this be more than the hypotenuse? That is one thing you have to understand. How can any side be greater than, है ना. हाँ, वो एक चेक लगाइए, दिमाग में चेक लगाना है अपने, कि जैसे आपका आंसर 21 भी आ गया, आपने कहा ये तो इम्पॉसिबल है यार. चलिए अगला क्वेश्चन, फटाफट से क्वेश्चन उठाएंगे, आज की वीडियो शॉर्ट होने वाली है. वेरी सिमिलर टू द अदर वीडियो दैट आई मेड टुडे, चॉपस्टिक्स वाली, है ना. टू द पॉइंट बात करनी है. सो अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू अ स्टॉर्म. ओ माय गॉड, आई एम ए नेचर लवर. इस तरह के जालिम से क्वेश्चंस मुझे सच में नहीं अच्छे लगते. ये मजाक है क्या यार, क्यों तोड़ रहे हो यार. And broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle of 30 degrees with it. इसीलिए मैं कह रहा था यार,
अरे अर्जुन भंडारी कोई बात नहीं यार, यू आर अ वेरी वेरी गुड स्टूडेंट, गलती से 40 लिख दिया तो क्या हो गया भाई, पाप थोड़ी कर दिया। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 meters, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। कितना अच्छा क्वेश्चन, अगर आप इसको बस समझ लो, इसको ऐसे खड़े होके पढ़ो 2-3 बार। तो क्या बोल रहे हैं, एक पेड़ है जो टूट गया है ना, ऐसे ऐसे टूट के गिर गया होगा, ऐसे कुछ हुआ होगा, है ना। कोई बहुत ज्यादा आर्टिस्ट नहीं हूं मैं, बट या दिस इज व्हाट आई assume what they're saying. Distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground. So basically what they're saying is यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है ये पास था 8 मीटर, इतना बड़ा पेड़ था यार। हाँ 8 मीटर। Now they're saying the tree touches here making an angle 30 degrees with the ground. So basically what we know also, this angle is 30 degrees। ठीक है, ये आपका डायग्राम बन गया, जैसे ही डायग्राम बना बात खत्म। तो इसका अगर मैं सिंबॉलिक डायग्राम बनाऊं तो मेरे पास कुछ ऐसा डायग्राम बन रहा है। ये साइड मेरे को दिया 8 मीटर, लेकिन ये एंगल वैसे 30 डिग्री लग नहीं रहा, तो इसको चेंज कर देते हैं कि गलत ना बन जाए। हाँ कुछ ऐसा बनना चाहिए कि दिस एंगल इज 30 डिग्रीज एंड दिस साइड इज 8 meters, and they're saying find the height of the tree. Now height of the tree kya, height of the tree is basically this plus this, isn't it? What is height of the tree? So height of the tree is this plus this. So this we know is something, this is opposite and this is hypotenuse. So aren't we supposed to find hypotenuse and also the opposite? दोनों पता करने हैं हमको, क्योंकि height of the tree is पूरा ये मिलाकर। तो इसको मैं ऑपोजिट लिखूं, इसको हाइपोटेन्यूज लिखूं, तो मैं लिख सकता हूं ऑपोजिट बाय 8, एंड ऑपोजिट बाय 8 इन दोनों का रिलेशन निकालना है ना, वो तो 10 होगा, इज इक्वल टू 10/30। देखिए यहां तक समझ में आता है आपको? बेसिकली मेरे को ऑपोजिट निकालना है, बेस पता है, opposite by adjacent is 10, so opposite by 8 is 10/30, 10/30 is 1 by root 3, so this is 1 by root 3, so opposite is coming out to be 8 by root 3 meters। यहां तक क्लियर है क्या आपको? 8 by root 3 मीटर। जल्दी लिखिए यार, यस नो कुछ लिखना पड़ेगा आपको, बिकॉज माई एनर्जी इज बेस्ड ऑन योर एनर्जी। आपकी जितनी एनर्जी होगी उतनी मेरी एनर्जी होगी, है ना, क्लियर? हाँ ठीक है। अब हाइपोटेन्यूज देखते हैं, हाइपोटेन्यूज और इसका क्या नाता है, कॉस का नाता लग रहा है मुझे, है ना, दिस। सो आई कैन से 8 divided by hypotenuse is equal to 8 divided by hypotenuse is equal to cos 30 degrees, cos 30 degrees। cos 30 कितना होता है? cos 30 is root 3 by 2, so 8 divided by hypotenuse is equal to root 3 divided by 2। यहां तक क्लियर है आप सबको, है ना? देवांश बेटा वेरी सिंसियर स्टूडेंट, आपको यहां तक क्लियर है? सो बेसिकली आ गया 16√3, 16 by root 3। So height comes out to be, so this implies height is equal to 16 by root 3, and then you add and rationalize whatever you want to do, and then you add and rationalize, khatam, है ना? Is this the answer? Yes, है ना? Then you add these two। चलो कर ही लेते हैं ना जब बात चली है। So 8 by root 3, 16 by root 3, that is 24 by root 3, 24 by root 3। देखिए 8 by root 3 plus 16 by root 3, लेकिन ये सुंदर सा नहीं लग रहा मुझे, थोड़ा सा ना डिवाइडेड बाय रूट 3। इट्स नॉट अबाउट मी, इट्स अबाउट द, है ना, द ओवरऑल परसेप्शन कि भाई डिनोमिनेटर में क्या कर रहे हो यार ये। सो देन यू रैशनलाइज, यू से ओके आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई अप एंड डाउन बाय रूट 3, सो 3 बन गया 8√3, आंसर आ गया 8√3 meters is your final answer। Heights and distances, easiest chapter. The only problem here is if you're not able to visualize and make the diagrams। अगर आपने सिर्फ रट्टा मारा है पंडित बद्री प्रसाद हर हर होले सो का टोआ, तो आप एक मेंटली विजुअलाइज नहीं कर पाओगे। अगर आपको विजुअलाइज करना आ गया, डायग्राम बना दिया, दिस इज द इजीएस्ट चैप्टर एंड द मोस्ट स्कोरिंग। मोस्ट स्कोरिंग में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक परसेप्शन है ये डिफिकल्ट है, तो क्वेश्चंस के मार्क्स भी ज्यादा होते हैं इनके, है ना, ये एक रीजन है। और जबकि इजी है, मतलब इजी क्वेश्चन के बदले आप ज्यादा मार्क्स ले सकते हो। अगला सवाल, 5वां क्वेश्चन।
Good, good. Thank you, Arjun Bhandari. I'm already proud of you, बच्चे. Winning that medal will add to that. Yes. Question number five is about kite. कौन कौन उड़ाता है पतंग? यार मैं तो उड़ाता हूँ. यहाँ पर और कोई पतंगबाज है क्या? कोई और पतंगबाज है यहाँ पे मेरे अलावा? फिर पेच लड़ाएंगे कभी ना कभी. चलिए. हाँ, तो काइट इज फ्लाइंग एट हाइट ऑफ 60 meters above the ground. चलिए काइट बना देते हैं, है ना. ये काइट आ गई अपनी, है ना. काइट, इट्स फ्लाइंग. सो ये ग्राउंड है. इट इज फ्लाइंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 meters above the ground, है ना. डायग्राम बना लिया हमने. 60 meters. लोहड़ी पे उड़ाते हो? नहीं, मैं तो जब मौका मिल जाए. अब अगर आज मूड अच्छा है, हवा अच्छी चल रही है, तो मैं थोड़ी कहूंगा लोहड़ी का वेट करो. हो सकता है लोहड़ी में बारिश ही आ जाए या हवा बहुत तेज हो जाए. भैया बहाने मत करो. देखो, आपको पेच लड़ाना है तो सीधी बात करो. हाँ. सो इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 degrees. तो यहाँ पर एक डोरी बांधी और बोला दिस इंक्लिनेशन विद द ग्राउंड. ग्राउंड क्या है? ग्राउंड तो ये है. सो दिस इज 60 degrees, है ना. फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग. मतलब ये डोर ढीली नहीं पड़नी चाहिए, है ना. सीधी डोर है. तो बस अब तो आपको क्या करना है, ये पता है, ये पता करना है. तो इनका क्या रिश्ता है? इनका साइन का रिश्ता है. सो वी विल से 60 divided by this length of the door is equal to sine 60. बस खत्म. Sine 60 is root 3 by 2. So length is equal to 120 by root 3, है ना. होगा √3/2. सो 2 ऊपर जाएगा. और फिर आप इसको रैशनलाइज करना मत भूलिए. सो मिस्टेक नंबर 1 एंड मिस्टेक नंबर 2, यूजुअली व्हाट हैपेंस इन बोर्ड एग्जाम्स, मिस्टेक नंबर 1 इज यू लीव इट हियर. नहीं, यू डोंट लीव इट देयर. यू डोंट लीव इट देयर. यहां नहीं खत्म कर सकते आप. इसको रैशनलाइज करिए. सो ये आ जाएगा 40√3. डू यू थिंक माई आंसर इज राइट? विल आई गेट फुल मार्क्स विद दिस इफ आई राइट 40√3? डू यू थिंक दिस इज राइट? यस. देवांश गुप्ता बोलता है भाई मीटर लिखिए, है ना. मीटर नहीं लिखोगे मार्क्स नहीं मिलेंगे. तो थ्री मिस्टेक्स आई वुड से. पहली मिस्टेक बोर्ड एग्जाम में करते हैं स्टूडेंट्स के, रैशनलाइज नहीं करते हैं, आधा मार्क कटेगा. सेकंड मिस्टेक करते हैं 40√3 लिख दिया, मीटर नहीं लिखा. तीसरी मिस्टेक वो करते हैं जो देवांश ने लिखी. देवांश ने एम बड़ा लिख दिया. एम छोटा लिखना है जैसे अर्जुन भंडारी ने लिखा, है ना. देवांश, मैं आपका नाम इसलिए ले रहा हूँ, बहुत सिंसियर स्टूडेंट हो, अब बुरा नहीं मानते मेरी बात का. हाँ, मीटर को हमेशा छोटा लिखना है, मीटर को बड़ा नहीं लिख सकते आप. चलिए अगला सवाल ऑन योर स्क्रीन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8, and again coming from your beautiful NCERT book. A statue 1.6 meters tall stands on the top of a pedestal. From a point on the ground, the angle of elevation of the top is 60 and the angle of elevation of top of the pedestal. Statue 60, pedestal 45. Find the height of the pedestal. ठीक है, तो पहले पेडेस्टल बना दिया, एक प्लेटफॉर्म टाइप का ये बना दिया. इस पर एक स्टैचू बनानी है ना. फिजिक्स बाबा आ गए, फिजिक्स बाबा की स्टैचू बना दी, है ना. दिस इज फिजिक्स. ठीक है. सर आई डोंट केयर अबाउट मार्क्स, आई वांट टू क्वालिफाई IOQM नॉट बोर्ड्स. अच्छा. एंड देवांश सेज लेटर गेट्स ऑटोमेटिकली कैपिटलाइज्ड. ठीक है. तो यहां पर इस ग्राउंड से, किसी पॉइंट से बोलते हैं स्टैचू इज 1.6 meters टॉल. अच्छा, ये भी बता दिया कि ये यहां से यहां तक 1.6 मीटर है, और यहां से यहां तक नहीं पता हमको. यहां से यहां तक नहीं पता तो एक्स मान लेते हैं ना. जो कुछ नहीं पता तो उसको मैं एक्स मान लेते हैं. अरे सॉरी वॉरी मत किया करो देवांश. हाँ. अब बोलते हैं किसी पॉइंट से एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, मतलब यहां से लेके यहां तक की जो लाइन गई, ये 60 डिग्रीज एंगल बना रही है. एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल हियर इज 45. नाउ इतना तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है कि कौन सा 45 है कौन सा 60 है. बड़ा एंगल 60 होगा, छोटा 45 होगा, ऑब्वियस सी बात है. सो दिस एंगल इज गिवन एज 45 एंड दिस बिगर एंगल इज गिवन एज 60. बस खत्म. अब तो बहुत इजी है ना. अब प्रॉब्लम क्या है कि इस ट्राइंगल को मैं देखूं, इसमें ना एक्स पता है ना ये डिस्टेंस पता है. इस डिस्टेंस को अगर मैं डी मान लूं
ना मुझे x पता है ना d पता है, 45 पता है. So then I can say x divided by d is 1045, but उसका मैं क्या करूंगा, दो वेरिएबल है, I need two equations. You have to understand there are two variables in this. बस दो इक्वेशन बना दीजिए, बाकी आप खुद सॉल्व कर लेना. पहला, इस ट्राइंगल में मैं देखूं, छोटे ट्राइंगल में यू कैन से x डिवाइडेड बाय d is 1045. 1045 is 1, isn't it? 1045 is 1, so x is equal to d. So this implies x is equal to d. That is your first equation. एक इक्वेशन बन गई, x is equal to d. सेकेंड इक्वेशन, बड़ा ट्राइंगल लूंगा, बड़े ट्राइंगल में ये तो d है और ये x प्लस 1.6 है. सो यू विल राइट x प्लस 1.6 डिवाइडेड बाय d इज इक्वल टू 1060. 1060 इज रूट 3. बस अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए. सो x प्लस 1.6 इज इक्वल टू रूट 3d और x की जगह आप d रख दीजिए. ये दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, पीस ऑफ केक है. इसके आगे अगर मेरे को सॉल्व करना पड़ा तो फिर तो मैं गलत ही चैप्टर पढ़ा रहा हूँ. फिर तो मुझे बेसिक अलजेब्रा पढ़ाना पड़ेगा 6th 7th 8th का, है ना. ये इसके आगे आप इसको कर लोगे. क्वेश्चन नंबर 8. See, the main thing in height and distances is you visualize the situation, you make a diagram and you write equations. जितने वेरिएबल उतनी इक्वेशन चाहिए हमको. Okay. So two poles of equal heights are standing opposite to each other on either side of the road, which is 80 meters wide. रोड है 80 meters की, दोनों साइड पोल्स हैं बराबर हाइट के. From a point between, center नहीं बोला, between them on the road, the angles of elevation of top are 30-60. Find the height of the poles and the distance of the point from the poles. So एक डायग्राम बना लेते हैं. पोल नंबर 1, पोल नंबर 2, और बीच में एक रोड है जो 80 मीटर्स वाइड है. पोल की हाइट नहीं पता, लेकिन पता अगर ये h है तो ये भी h है. यहां तक तो हमको पता है कि दोनों की हाइट बराबर है, तो ये h है तो ये h है. यहां तक क्लियर आप सबको? यहां तक क्लियर है? गिव मी यस और नो. यहां तक अगर क्लियर है तो आई नीड ए यस और नो, कि एटलीस्ट मुझे पता लगे भाई आपको समझ में आ रहा है. ठीक है ना, यहां तक क्लियर, ठीक है, परफेक्ट है ना. सो फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन, बिटवीन मतलब सेंटर पे नहीं है, यहां पर कहीं भी बना दिया मैंने, तो एक तो ये एंगल बनेगा मेरा और एक ये एंगल बनेगा. तो ऑब्वियसली ये एंगल बड़ा है, तो बड़ा वाला एंगल मैं 60 मान लेता हूँ. इस एंगल को मैं 60 मान लूं अगर, 60 डिग्रीज, और इसको 30 मान लेता हूँ, है ना. बोल रहे एक तो आप हाइट बताइए, एक ये डिस्टेंस बताइए, है ना. तो ये डिस्टेंस मुझे नहीं पता. अगर मैं इस डिस्टेंस को, एक मिनट एक काम करते हैं, इस 80 मीटर्स को हटा दूं, पूरी रोड 80 की थी, तो यहां से यहां तक जो है, यहां से यहां तक जो होगा, अगर मैं इसको x ले लूं, तो यहां से यहां तक 80 माइनस एक्स बचेगा. ऑब्वियस सी बात है यार, अब ये थोड़ी सिखाना पड़ेगा. टोटल 80 था, अगर ये x है तो ये 80 माइनस एक्स है. यस और नो, है ना. यहाँ तक क्लियर है, ठीक है, परफेक्ट है. अब इसमें फिर दो वेरिएबल्स हैं तो दो इक्वेशन लगेंगी. तो दो ट्राइंगल भी दिख रहे हैं ना मुझे, दो इक्वेशन चाहिए. देखो दो वेरिएबल्स हैं तो दो इक्वेशन लगेंगी, तो दो ट्राइंगल्स भी लगेंगे. तो एक ये ट्राइंगल है, एक ये ट्राइंगल है, बस tan थीटा लग रहा है. देखिए ऑपोजिट बाय एडजेसेंट. सो आई कैन राइट h by x is equal to 1060. 1060 is root 3. So this implies x is equal to root 3x. ये मेरी पहली इक्वेशन बन चुकी है एक ट्राइंगल के बेस पर. अब दूसरा ट्राइंगल ले लीजिए. h divided by 80 minus x is 10 130. So 10 30. So 1030 is 1 by root 3. So root 3h is equal to 80 minus x. ये मेरी सेकेंड इक्वेशन बन चुकी है. रूट 3h इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स. सॉल्व करना है, कर लीजिए. h की जगह रूट 3x यहां लिख देते हैं, है ना. नहीं नहीं, रूट 3h लिखना था तो जल्दी में लिख दिया, माफ कीजिएगा. रूट 3h, सॉरी माय बैड. सो रूट 3 टाइम्स h. सो रूट 3 टाइम h. अब h पता है रूट 3x है, तो यहाँ रूट 3x लिखा, तो रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय रूट 3x गिव्स मी 3x. सो दिस गिव्स मी 3x इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स. अब ये माइनस एक्स इधर आके 4x बनेगा. सो 4x is equal to 80. So this implies x is equal to 20 meters. x 20 meters है तो h हो गया 20 root 3. So this implies further that height is 20
√3 मीटर। सो क्वेश्चन में दो चीजें पूछी हैं, एक तो पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, हाइट ऑफ द पोल्स इज 20 √3 meters ईच, एंड फाइंड द डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। सो एक पोल से डिस्टेंस जो है दैट इज 20 मीटर्स, ये 20 मीटर्स है, और ये है ज्यादा डिस्टेंस, दिस इज 20, so 60 meters, है ना, 20 and 60, like Arav is saying. So this distance here, right here, is 60 meters. Oh, sorry, that one has to be 20 meters क्योंकि वो x है ना, और छोटा भी होना चाहिए, obvious सी बात है. So this is 20 meters, and this one is 60 meters. So these are the distances. Clear है सबको? है ना? Let's proceed. Very very easy topic. As I said earlier, अब ये करके देखिए, है ना? So from the top of a 7 meter high building, तो 7 मीटर हाई बिल्डिंग बना दी, दिस इज 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ठीक है। फ्रॉम द टॉप, टॉप से बात हो रही है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल। अच्छा, तो इसके लिए थोड़ा सा बिल्डिंग को छोटा कर देते, बिल्डिंग को ज्यादा ही बड़ी बना दी थी। सो बिल्डिंग यहां पर है ना, दिस इज 7 meters। नाउ टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 68, डिप्रेशन इज 45। सो देखिए कितना बढ़िया 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 क्वेश्चन है ये, कि मेरे पास एक केबल टावर है यहाँ पर लंबा सा, दोनों जमीन से ही शुरू हो रहे हैं ना। अब बोल रहे हैं कि आप यहां पर खड़े हो और यहां से एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड डिप्रेशन ऑफ द बॉटम, देखिए ध्यान से देखिएगा, एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड डिप्रेशन ऑफ द बॉटम। बेसिकली अब ध्यान से देखो कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप, टॉप को देख रहे हो तो एलिवेट हो रहा है, और बॉटम को देख रहे हो तो डिप्रेशन हो रहा है। क्योंकि आप देखो ऐसा भी हो सकता था कि टावर ऐसा था और टॉप एंड बॉटम, लेकिन तब दोनों डिप्रेशन होते। If that was the case, they would have said the angle of depression of the top and angle of depression at the bottom. पर उन्होंने ऐसा नहीं बोला, उन्होंने बोला कि angle of elevation of the top and angle of depression of the bottom। मतलब कि जो ये जो टावर है केबल का, it is bigger than the building itself। So ये मेरा horizontal है, तो वो बोल रहे हैं ये जो एंगल है, this angle is 60 degrees, angle of elevation is 60 degrees, and this angle is how much? This angle is 45 degrees। बहुत बढ़िया जी, 45 degrees। अब बोले डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। डू यू ऑल एग्री विद मी कि हाइट ऑफ द टावर इज मेड अप ऑफ दिस डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू हियर, लेट्स से h1 एंड दिस इज h2, है ना। हाइट ऑफ द टावर इज मेड अप ऑफ दिस, क्योंकि आई विल कंसीडर दिस वन ट्राइंगल एंड दिस वन ट्राइंगल, दो ट्राइंगल की बात हो रही है। तो अगर मैं h1 निकालूं और h2 निकालूं, मेरा आंसर आ गया। तो h1 तो 7 ही है यार, एक मिनट, h1 तो 7 ही है, ये तो 7 ही है, तो h1 इज 7, ये तो 7 है। अब मेरे को सिर्फ h2 निकालना है। अब h2 में प्रॉब्लम क्या है, h2 में बस ये पता है ना, ये पता है ना, ये पता है ना, एंगल जरूर पता है, बट द पॉइंट इज मेरे को कोई भी एक साइड नहीं पता। आप देखो, अगर आपको एक एंगल कोई पता है उसका और एक साइड पता है, आप बाकी सब निकाल लोगे, लेकिन इस ट्राइंगल में एक भी साइड नहीं पता। तो हम वापस नीचे वाले ट्राइंगल में आते हैं, हम बोलते हैं नीचे वाले ट्राइंगल में ये 45 डिग्रीज पता है, ये 7 पता है, इस ट्राइंगल की बात हो रही है, तो इस ट्राइंगल में ये 7 पता है, ये 45 पता है, तो मैं अगर ये पता कर लूं तो दिस इज कॉमन इन बोथ द ट्राइंगल्स। सो वॉट एवर इज दिस साइड इन दिस ट्राइंगल इज इन दिस ट्राइंगल ऑल्सो। ये साइड तो यार 7 ही होगी ना। आप खुद सोचो, अगर मैं ये वाला नीचे का ट्राइंगल लेता हूं, तो दिस साइड इज ऑपोजिट एंड दिस साइड इज एडजेसेंट, है ना। लेट्स कॉल दिस डिस्टेंस एज x। तो कैन आई से h1 by x, so I can say h1 by x is equal to 1045। क्यों 1045? क्योंकि this angle is 45, this is opposite and this is adjacent, और opposite 7 है, तो h1 की जगह 7 रख दिया। 1045 is 1, so I know this x is equal to 7। ये भी 7 है, this side is also 7। If this is 7, h2 फिर आ जाएगा, तो मैं लिखूंगा h2 divided by 7 is equal to sin 6, oh sorry 1060। h2 by x is sin, नहीं sorry 10 is equal to 1060।
1060 is root 3. So H2 is 7 root 3. So the total height of that tower is equal to H1 plus H2, which is 7 plus 7 root 3. Root 3 की value 1.732 होती है roughly. You can plug that in and that is your answer. Isn't that so straightforward? चलें आगे. चलिए अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं and that is question number 15. So two poles of equal heights are standing opposite each other on either side of the road. Oh, ये तो सेम ही आ गया. Question 15 गलत कॉपी हो गया क्या? क्वेश्चन 15 गलत कॉपी हो गया. चलिए कोई बात नहीं है ना, ऐसी छोटी छोटी गलतियां होती रहती हैं, बट दैट इज ऑल है ना. सो बेसिकली हमारे पास क्या स्ट्रेटेजी होती है, हम कोई भी जो क्वेश्चन है स्ट्रेटेजी पॉइंट, फर्स्ट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन, अंडरस्टैंड, सो यू अंडरस्टैंड सिचुएशन and the second point is immediately you make the diagram, draw the diagram. अब डायग्राम का मतलब ये नहीं पेंट ब्रश लेके बैठ गए पेंटिंग में लगे, वो नहीं, एक स्केच बनाना है सिंपल सिंबॉलिक टाइप है ना, जिसमें ट्राइंगल्स दिखे. सो द थर्ड स्टेप इज फ्रॉम दैट ट्राइंगल आइडेंटिफाई राइट एंगल ट्राइंगल. उस डायग्राम में कहीं ना कहीं राइट एंगल ट्राइंगल होगा, नहीं होगा तो आप ढूंढिए. देखिए मेरे को इनिशियली ये दिया था सिचुएशन, उन्होंने कहा था ये और ये, तो मैंने कहा वो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, तो मैंने बीच में एक लाइन बना दी और मैंने कहा अब देखिए अब दो राइट एंगल ट्राइंगल आ गए. सो इफ यू डू नॉट हैव अ राइट एंगल ट्राइंगल यू विजुअलाइज एंड यू मेक अ राइट एंगल ट्राइंगल. एंड स्टेप नंबर 4 इज सिंपली यूज साइन कॉस है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक ratios. Use one of those ratios. It will be usually sine and tan. Cos rarely use hota hai. I'm just saying based on the experience with so many questions. Usually they will give you the question, not they will give you the situation itself demands you're going to use tan theta and sine theta. And that completes our chapter. Wasn't it so easy? And I need comment on your chat box and the comment box. Did you really find it so easy? Heights and distances, मेरे को तो लग रहा था 15-20 मिनट में खत्म कर दूंगा. I actually took more time, but it's really very easy. Once you get a hang of it, once you understand how to deal with these questions, it is the easiest chapter. And again, this is the most scoring chapter. The reason being because इसको difficult मानते हैं, इसके marks ज्यादा दिए जाते हैं, 3 नंबर का क्वेश्चन, 4 नंबर का क्वेश्चन, जो ऐसे चुटकियों में आप कर लोगे. चलिए, so we have launched NSEP module 3 in case you want to join, and if you don't want to, that's fine. I'll keep coming with accelerated maths. Noodle chopstick series has already been started. So this is 5 module part NSEP course. We have already completed module 1 and module 2. Module 3 will be starting on 16th of May. Upcoming Thursday se classes start hain. If you were not part of these two, that's fine. If you have Josh, you can join module 3. I will ensure that you will be able to cope up. You will be understanding everything if you have the determination, the willpower, the determination to work hard. Basically, that's most important thing. And when you buy these modules, you get free recording of first 2 modules. So that's fine, anyways. And then now class timings for this module 3 is Monday, Wednesday, Friday, 6 to 7:30 p.m. It starts on 16th May. Price is only 2,500, but there is a coupon, I think. Oh, it's here basically, BS Pro 1. So apply this coupon, BS Pro 1, you'll get 250 rupees off. But the better option is to buy module 3, 4, 5. So that's 2,500 times 3, 7,500. You get 6,500, 1,000 rupees minus किया और फिर -10% और हो जाएगा, तो 5850. I'll write it here. So the entire thing is available only for 5850. So rupees 5,850 में you get the 3 modules which include the test on Sunday, doubt clearing on Telegram group, and also you get the recordings, free recordings, you know, for the previous one. So whatever modules you join, you get module 1 and 2 की free recording. So you can join this using the coupon code here. Also नीचे link दिया हुआ है, उसमें आप लगा दीजिए coupon code. और कोई help चाहिए तो आयुष को call कर लीजिए. Note down his number. He is available anytime for you.
अब ये नहीं रात को 2 बजे कॉल कर रहे हैं, ऑब्वियसली रीजनेबल टाइम फ्रेम में. So 8050291657, he can help you with enrollment. I'll keep coming for getting you these videos. So accelerated maths में next question is going to be, next topic I mean is going to be circles. सर्कल को, अरे यार ये सर्कल इतना छोटा क्यों कर दिया यार, ये ना सिलेबस कम करते जा रहे हैं यार. सर्कल में तो बहुत कुछ होता था, सर्कल तो फटाफट 15-20 आधे घंटे में हो जाएगा. एरियाज रिलेटेड टू सर्कल भी हो जाएगा. मैं दोनों को मर्ज कर देता हूँ, लंबा सेशन करके चैप्टर 10, सॉरी चैप्टर 10 और 11 को इकट्ठा कर लेते हैं. हाँ ये अच्छा आइडिया है, सर्कल्स पूरा एक साथ कर लेंगे. सो ध्रुव गॉट गोल्ड मेडल फॉर इंडिया, प्राउड मोमेंट फॉर अस. Aditi Navneesh got silver medal. So they got in chemistry Olympiad, international silver we are talking about, international gold we are talking about in physics Olympiad. And if you want more information, this is the channel that you should join. It is VOS Beyond Books Brigade. And so you go to t.me VOS Beyond Books Brigade, or you can scan this QR code. I'll keep coming with these videos more and more very quick soon. So keep up the high Josh, students. So bye bye, take care. Keep up the Josh. Josh is most important.